के है के अर्चना सोरेंग कहाँ कर है के और कैसे ई आदिवासी छोड़ी पहुंच गया न्यूयॉर्क में। तो आज हमने मने अर्चना सोरेंग जे उड़ीसा से बिलोंग करेला, उड़ीसा कर छोटे सुन गांव बिघाबाग से बिलोंग करेला और खड़िया ट्राइब से है के आज इकर विषय में हमरे मने जानब इकर पूरा जीवनी कर विषय में। तो स्वागत है आदिवासी न्यूज एक आवाज, मैं मिस्टर हाबिल। अर्चना सोरेंग जो है के कर बाबा का नाम है के विजय कुमार सोरेंग और उकर माता का नाम है के उषा क्रिकेटा। उगो बिघा बाकर राजगंजपुर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेला, जेगो छोटे सुन गांव में उगो रहत रहे। छोटे ही उम्र में उकर बाबा कर देहांत हो जाए कर बाद उगो अपन पढ़ाई में फोकस करेला और उकर जे सपना रहे कि उ कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन कर लगुन काम करबू और पर्यावरण कर लगुन काम करबू, तो उकरे विषय में वो रिसर्च मन करेला। अर्चना सोरेंग पटना को वुमेन कॉलेज से बीए कर लग, उकर बाद में ग्रेजुएशन कर लगुन, मास्टर डिग्री कर लगुन, उगो मास्टर डिग्री कर लगुन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से हुआ से उगो पढ़ाई उगो कंप्लीट कर लग। पढ़ाई करे कर बाद में वो अपन सपना के पूरा कर लग, उगो रिसर्च करे शुरू कर लग, पर्यावरण के लिए, जल जंगल के लिए, जमीन के लिए, आदिवासी मन कर ऊपर लिखे। उकर बाद में कुछ दिन बाद उकर जॉब है उगो उड़ीसा का रिसर्च सेंटर में, जे पर्यावरण रिसर्च सेंटर में उकर जॉब होला। आज उगो उसी जगह में एज ऑफिसर उगो है, रिसर्च ऑफिसर का रूप में पोस्टेड है। हमरे मन बात करते रहे कि अर्चना सोरेंग जो है कि कैसे उगो न्यूयॉर्क तक पहुंचला। तो पिछले साल कर बात करबू, पिछले साल में अर्चना पूरन सिंह जेगो 27 साल का है के, अर्चना पूरन सिंह मोरा और उनके बता के चाहना 27 साल का है के जेगो न्यूयॉर्क तक पहुंच गया। और कहाँ कैसे पहुंचला कह के वो जब अपने इन्वायरमेंटल अपने पर्यावरण कर लिखे रिसर्च करते रहे और उनके विषय में लोग मन के लिखत रहे, कई सारे बातें के लिखत रहे सोशल मीडिया के थ्रू से, फिर फेसबुक के थ्रू से और कई सारे सोशल मीडिया के थ्रू से उनके विषय में जानत रहे, बताते रहे लोग मन के। और उनके प्रोजेक्ट के देखते हुए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन उनके चयन कर लाइन और उनके पूरा वर्ल्ड में 7 लीडर मन के चुनल गया। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव अर्चना सोरेंग करलक और आज उगो यूएन कर एगो मेंबर है के। I now give the floor to Ms. Archana Soreng, indigenous youth climate activist from the Kadia tribe and former member of the United Nations Secretary General's Youth Advisory Group on Climate Change. Excellencies, ladies and gentlemen, Johar. I'm truly honored and humbled as I stand before you at the United Nations General Assembly to celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. I extend my heartfelt gratitude to the President of General Assembly for giving me this opportunity and express my sincere gratitude and appreciation to the Secretary General of the United Nations for his leadership and commitment. With heartful of love, I pay respect to our indigenous elders and ancestors across the globe, remembering their sacrifices and resilience. As a young person, being the torchbearer of the present and the future, I believe that the principles enshrined and values articulated in the Declaration remains as relevant as ever and is a significant landmark in itself. As we celebrate this milestone, it is extremely important to acknowledge, confront the uncomfortable truth, and address the root causes of persistent injustices. As we are still experiencing gross human rights violations across the globe, in different shapes, kinds, and degrees, directly and indirectly.
the journey towards realizing these rights enshrined in the Declaration have been varied and uneven, especially with us, indigenous peoples, children, youth, women, and other marginalized communities, as we still continue to face systemic discrimination, cultural erasure, and gross human rights violation. We need new, stronger, and appropriate strategies to implement and protect the very existence and essence of the Universal Declaration of Human Rights. Denial of human rights can no longer continue and has to be an integral part of the national policies of the country. As we navigate the complexities of climate crisis, we must recognize the interconnectedness of climate, indigenous people, and human rights. We indigenous people have been contributing towards climate action, biodiversity conservation through our worldviews, way of living, indigenous knowledge, and community-led practices. It's not only about what we do, but who we are is equally important and needs to be respected. For us, nature is a source of identity, culture, tradition, and language. In our indigenous worldview, we are not mere part of nature, but we are nature itself. Even though we are the least contributors to climate crisis, we continue to be the most affected by the impacts of climate crisis. We are witnessing the melting of our sacred glaciers, destruction of our lands, forests, and territories, the devastation of biodiversity. The irony is that we are being targeted and our human rights are being violated as we continue to protect the nature, biodiversity, and defend our territory, contributing towards the climate action. Thus, climate justice is a matter of our mere existence. And we call for an inclusive space where our very existence is respected. Our voices are listened to, valued, and integrated in the decision-making spaces. And most importantly, our right over our land, forests, and territories is respected, recognized, and enforced. I hereby emphasize that indigenous people and young people should be leaders of climate action and not victims of climate policies. As I conclude, I firmly believe with love, respect, and solidarity, deep-rooted with justice, we can attain Paris Agreement and sustainable development goals, and moreover, safeguard our human rights. Thank you, Johar. I thank Ms. Soreng. आज अगर मैं अर्चना सोरेंग कर बात करूं तो वो बहुत कष्ट से पढ़ाई लिखाई कर लग, लेकिन आज वो अपने मुकाम में पहुंच चुके हैं। मगर और मन के मोटिवेट करना अर्चना पुरान सिंह कर जीवनी से कि राउर मन के भी पढ़ाई लिखाई के जरूर करे चाहिए और जितना सकबार और मन के पढ़ाई लिखाई करे चाहिए और आगे अपन सपना के पूरा करे लगे संघर्ष करे चाहिए। जैसे कि अर्चना सिंह अपन लाइफ में संघर्ष कर लग और अपन लाइफ में अपन मुकाम के हासिल कर लग। आज जुगो हमारे आदिवासी कर खड़िया समाज से उगो अपने आप के और हमारे आदिवासी का नाम ऊंचा कर लग। मोरावर मन के भी ये बात कहे के चाहना तो इतने कहे के आज कर वीडियो के आज कर न्यूज के मोरावर मन के विदा लगे चाहना। सबके धन्यवाद। जोहार।